Good morning, students. Today we'll revise the chapter Strategy of Industrial Growth 1947 to 1990. Okay. So first of all, we'll discuss about the importance of industry, that how much industries or industrialization was important for the economic growth. Okay. So first of all, the first point says epicenter of economic growth. That means industries were very much important for the growth of the economy. Okay, as and when the economy observes the growth or the process of development, there happens structural transformation. Now, what structural transformation is? Structural transformation means when the share of a particular sector starts replacing the other. Okay, that means you can simply say when the share of a particular sector tended to rise in GDP. Here, in India also, the structural transformation happened when the path of development, we moved on the path of development or the process of development or the growth started. Okay, that means earlier, the major share or major agriculture sector or primary sector was the major contributor to GDP. Now, when the development started, the process of development started, the industrial sector or the secondary sector started to take over the share of agriculture sector. That means the share of industrial sector or secondary sector tended to rise in GDP gradually. Okay. That was the structural transformation. Okay, that means obviously the number of industries were also increased. Okay, जैसे जैसे शेयर इंक्रीज हुआ जीडीपी में, तो इसका मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हुई होंगी. ओके, या उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी भी साथ साथ इंक्रीज हुई होगी. दैट्स व्हाई देयर आउटपुट ऑल्सो टेंडेड टू राइज. ओके, उनका आउटपुट भी इंक्रीज हुआ. ओके, सो ग्रेजुअली the industrial sector became the center stage of the growth or the development. That means India's development or growth completely dependent on industrial sector. Earlier it was dependent on the agriculture primary sector though, but after 1947 or during the period of 1947 to 1990, the structural transformation we have observed. That means the share of primary sector started gradually declining and the industrial sector or the share of industrial sector started rising. Okay, that means variety of goods were started being produced, which were mainly produced in industries. Earlier, only food grains or the raw materials were being produced by the agriculture sector or the primary sector. Okay, जैसा कि primary sector या agriculture sector raw material produce कर रहा था, ठीक है, after independence, the focus of the government was on the development of industries or industrialization had been observed in the economy. So, the variety of goods were being produced or made available in the market. Okay. The next one is sources of employment. As we have discussed that the production capacity of the industries has also been increased after independence. Obviously, the requirement of or the demand for resources of production or means of production has also been increased. Okay, so the particular resource, the labor force or the human capital or the human resource, their demand also tended to rise. Okay, that gives the birth to rising opportunities of employment or employment opportunities has been increased over the years. Okay, when the employment opportunities tended to rise, the level of income of the general public also increases, and this level of income increases the quality of life of the general people. Okay, so with the increment or the rise in production of the industrial sector or the manufacturing sector, employment share has been increased in the market or the economy. As a result, the income of the general people also tended to rise over the years. The next one is source of mechanized means of agriculture or farming. Okay. As and when we have observed the process of development, the efforts were also made by the government to improve the output of the primary sector or the agriculture sector, and that could also be able or could also be possible only after introduction of machines in the agriculture or farming sector, or the government could also make the efforts to improve the means of agriculture or farming which were being used earlier in the farming sector or agriculture sector. Okay, जो कि farmers traditional या conventional means use कर रहे थे agriculture के, like irrigation facilities rainfall के ऊपर dependent थे mainly, and cultivators and harvesters जो थे conventional means थे, बुलक या फिर कैमल्स के थ्रू जो है कल्टीवेट किया जा रहा था. सो
The mechanized means should be introduced in the agriculture or primary sector if we do want to increase the production capacity. So, and these machines, or you can say the produced means of production, were produced or made in industries. Okay, जो machines थी, threshers थे, cultivators थे, harvesters थे, combines थे, ठीक है, ये सारी मशीनें जो है industries में produce हो रही थी. So, as and when the demand for machines increased in agriculture sector, the share of industrial sector or the production of industrial sector also increased. Okay, so during the mid 1960s, when we observed the green revolution and we introduced the mechanized means of production in agriculture sector, the demand for such mechanized means or machines has tended to rise. Okay, this also triggered up the demand for the production of industrial sector. The next one is imparts dynamism to the growth process. Earlier, all the goods or the commodities which were available in the market were produced in the primary sector. When the industrial sector observed a higher pace or rapid growth in its production, variety of goods or commodities were made available in the market for the general public. As a result, the demand pattern of the people also, or the consumers also, changes over the years or over the time. Okay, जब employment opportunities increase हुई, लोगों की income increase होना start हुई, तो लोगों का demand pattern भी change हुआ. Okay, they started demanding for variety of goods, and these variety of goods were made available by the industries because agriculture sector mere produces the goods of basic requirement, for example the food grains and raw materials. Okay, so लोगों की income increase हुई तो demand pattern change हुआ और they started demanding for variety of goods, and such variety of goods were made available by the industries. So ग्रोथ प्रोसेस में एक डाइवर्सिटी या एक डायनामिज्म जो है ऐड किया गया इंडस्ट्रीज के द्वारा, क्योंकि उन्होंने वैरायटी ऑफ गुड्स जो है मार्केट में अवेलेबल कराई, जिससे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ बिकॉज दे आर नाउ कंज्यूमिंग वैरायटी ऑफ गुड्स. ओके, they were not dependent on a single or a particular commodity. The next one is growth of civilization. Civilization is directly related or correlated with urbanization. Okay, basically industries set up their units or plants near to the markets or where they can easily or conveniently get the raw materials. Okay, ऐसे एरियाज जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है या मार्केट एरियाज के आसपास वो अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करेंगे, एंड मेनली मार्केट एरियाज और द मार्केट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन अर्बन एरियाज. ओके, सो इंडस्ट्रीज starting up or established their units near the urban areas, and this introduced the expansion of, or this gave birth or the paved a way for the expansion of urban sector or urbanization. Okay, and all the facilities which are available in the urban sector or urbanization has improved the quality of life of the people, and this improved quality of life become the term civilization. Okay, so industries had played an important role in the improvement or increment of the civilization for the general public. Okay. The next one is infrastructural growth. Basically, infrastructure are the facilities which are required or demanded or which are helping in the manufacturing or growth process. Okay, जो industrial sector की production में या manufacturing में help करने वाली services हैं, ठीक है, allied services हैं, उनको हमने infrastructure का नाम दिया. And these services are basically like banking, insurance, transport and communication. Okay, as and when the industrial sector or the share of industries started growing up, the demand for such services or such facilities in the economy tended to rise over the years. Okay, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ वैसे वैसे इन सर्विसेज या इन फैसिलिटीज़ की डिमांड भी इकोनॉमी में इंक्रीज हुई. ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी इंप्रूव होना शुरू हुई जो कि डिपेंडेंट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, क्योंकि इनकी डिमांड मेनली इंडस्ट्रीज ही कर रही थी. ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, a sine qua non of growth. The term sine qua non is essential requirement. That means industrialization is an essential requirement of growth. Basically, almost all the developed countries are dependent on the industrial sector or industries for their growth or development. Okay, and most of the developing countries are also trying or making efforts to improve or increasing or expanding their horizons in the industrial sector so that they can increase their pace of growth or development. Okay, so the countries like India, which are moving towards the path of development, were also needed to break through the process of industrialization. Okay,
So it is very essential, or it became very essential for the government to improve all the industrial base so that we can increase the GDP, or we can increase the pace of growth. Okay, GDP इसलिए बोला क्योंकि GDP is considered as the growth indicator. Okay, if GDP increases, that means growth also, or the rate of growth also increase. Okay, so these were the points which are showing the, or highlighting the importance of industries in the growth process of the economy. Next we will discuss about the contribution or the participation of state or the government in industrial development. Okay, or you can say what were the causes or what were the factors which made the government to initiate in industrial development in the economy. Okay, why did the state or the government had to initiate? गवर्नमेंट को या स्टेट को क्यों इनिशिएट करना पड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? उसके पीछे कुछ कॉजेज हैं. ओके, रीजंस हैं. द पार्टिसिपेशन, direct participation of government in industrialization or industrial development. The first one is lack of capital. To establish or to develop an industrial base, we need to invest a huge amount of money. Okay, that becomes the capital of that business or that industry. Okay, जो initially हम invest करते हैं amount of money, that becomes our capital. Okay, so to develop or establish heavy industries, basically which are needed or required for develop the infrastructure base in the economy. Okay, उन heavy industries को या large scale industries को establish करने के लिए एक huge amount invest करने की ज़रूरत थी. Okay, at the time of independence, the individuals or private individuals were not in a state or in a condition that they could make such investments or they could establish such industries in the country. Okay, उनके पास इतना पैसा नहीं था because our industry economy was financially very weak. काफ़ी फाइनेंशियली वीक थी इकोनॉमी, जिस वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर सके टू सेट अप द हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ओके, सो दैट द गवर्नमेंट हैड टू इनिशिएट. बेसिकली इंडस्ट्रियल बेस हमारा काफ़ी वीक था. इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें कुछ ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करती. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, पावर जनरेशन जो कि प्रोडक्शन में फर्दर हेल्प करती. ओके, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ का नाम दिया और इनको एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी. तो इंडिविजुअल्स के पास इतना पैसा नहीं था. ओके, सो जस्ट बिकॉज लैक ऑफ कैपिटल, द प्राइवेट गवर्नमेंट और द स्टेट हैड टू इनिशिएट. द नेक्स्ट वन इज low inducement to invest. Low inducement to invest. The first one, the private sector or the individuals did not have sufficient or adequate amount of money. The second one says the inducement, that means the willingness of the private sector or the private individuals was very low. They did not want to invest because the certainty of profit making or earning profits was very low in the economies like India, where the markets are not fully developed or where the people are very poor. Okay, तो प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है, या जो सर्टेनिटी थी वो काफ़ी कम थी. ऑप्शंस काफ़ी कम थे कि प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे इंडस्ट्रीज़. क्यों? क्योंकि लोग पुअर थे, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी. सो द एंटरप्रेन्योर्स वर नॉट certain that their products or their goods would be demanded in the market by the general public. Okay, इस वजह से they were less willing to invest in such industries. Okay, those were the base or the foundation of infrastructure. Okay, so ऐसी industries में private sector invest नहीं करना चाहता था क्योंकि वहाँ पे उनको सर्टेनिटी नहीं थी, श्योरिटी नहीं थी कि वो प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ओके, क्योंकि लोगों की इनकम कम थी. और यहाँ पे एक सर्कल हम देखते हैं कि जब इनकम कम होती है तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कम होगी तो इनकम भी कम होगी. लाइक इनकम से हम स्टार्ट करते हैं, लोगों की इनकम कम है तो दे विल डिमांड वेरी लेस इनकम, लेस डिमांड, बिकॉज उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, रियल इनकम कम हो जाएगी. जब अर्न ही कम करेंगे तो खर्च भी कम करेंगे. जब डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस भी कम करेंगे, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे. जब मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रहा है तो प्रोड्यूस क्यों करके रखेंगे, स्टॉक क्यों मेंटेन करेंगे. ओके, सो डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम करने के लिए दे विल इन्वेस्ट लो. ओके, सो लेस प्रोडक्शन, लो इन्वेस्टमेंट्स और लेस इन्वेस्टमेंट्स. जब इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, प्रोडक्शन कम होगा तो फर्दर इट विल
create लोअर इनकम्स. ओके, तो इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा. दैट मीन्स लोगों की इनकम अभी भी कम ही रही. ओके, सो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से लोगों की इनकम पहले भी कम थी और अब भी कम रही, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कम थी. इस वजह से प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था. ओके, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम किया, प्रोडक्शन कम हुआ तो इनकम, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होंगी, प्रोडक्शन कम होगा तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम होगी. ओके, द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस दैट मेड द गवर्नमेंट और द स्टेट टू इनिशिएट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Initially, the government wanted economic equality in the country. Growth with social justice. This term social justice is related with economic equality in the economy. That means the government wanted to control the gap between the poor and rich, haves and have-nots. Okay, that means those who are having most of the resources in the economy and those who don't have sufficient or adequate resources so that they can fulfill their needs or demands. Okay, इस gap को, इस gulf को जो है government कम करना चाहती थी या control करना चाहती थी. That is the social justice. Okay, if the private sector was made to play an important role in the industrialization, they will grab the opportunities for their profits or to maximize their profits, or they will exploit the resources for maximize their profits or earning their profits. And they would adopt the capitalism techniques or capitalist model. That means they would produce only such goods which are being demanded in the market by the persons who are having more money. Obviously, they could earn profits only when their goods are being demanded, and only those persons would demand the goods, those who have incomes or those who have money to buy. Okay, so to promote the economic equality, government wanted to play a secondary role by the private sector and to control the resources or the market share by the public sector. Okay, so government had to play an important role or a primary role in the development or growth of the economy. Okay, that's why with the objective of social justice or the economic equality, the government of the state had to participate initially. Here some points are also clear mentioned, that some commanding heights or the industries of strategic significance. The industries which are known as commanding heights or the industries which are of strategic significance. These industries were controlled mainly or basically or on priority basis were controlled by the government, because these industries became the foundation of infrastructural growth in the economy. Okay, so the industries which are playing a primary role in the growth of the economy or the development of the country are known as commanding heights or the industries of strategic significance. Okay, like transport and communication, which are the base for प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग. ओके, क्योंकि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का बेस है तो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की होगी जो हेल्प कर रही हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में. अगर वही नहीं होगा, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं होगा. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्टेशन को हटा दिया जाए तो जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो प्रोडक्शन प्लेस पे ही रहेंगी, उनको मार्केट प्लेस तक नहीं पहुंचाया जाएगा, या फिर रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन प्लेस तक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो प्रोडक्शन हैपन नहीं होगा. ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी. सो दीज इंडस्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज विच आर सिग्निफिकेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी आर नोन एज द कमांडिंग हाइट्स. ओके, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स दैट मेड द गवर्नमेंट टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the process of industrialization. Next we'll discuss about the IPR 1956, Industrial Policy Resolution 1956, that made a clear roadmap in the process of industrialization. That IPR 1956, Industrial Policy Resolution, that provides the guidelines or the role of government in the process of industrialization. Okay, in IPR 1956 we have three major elements or the components of IPR 1956. We will discussing about it. The first one is threefold classification. Threefold
Classification. Under threefold classification, almost all the industries were categorized into three parts, okay, on the basis of ownership of resources, okay. उन industries के resources या उन industries का control किसके पास है, इसके base पे हमने उन industries को classify किया या फिर categorize किया, okay. सभी industries को तीन parts में classify किया, okay. This classification was made on the basis of ownership of resources, okay. Who is controlling or who has the control on resources or has the ownership of the resources. So these three categories were public sector enterprises, public private sector or public private partnership you can say, and private sector, okay. These three categories were broadly made for the industries, or the industries were categorized into these three parts. The industries or the resources which were owned by the government, mainly the industries which were basically significant or important in the development or the growth of the economy, for example, power generation, atomic energy, transportation industries, for example, railways, okay. These industries were owned by the government initially or earlier, because first of all, these industries were providing the services throughout the country. That means सभी को इन सर्विसेज की ज़रूरत थी. सो दीज सर्विसेज वर नीडेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री. सो सेटअप was such that the services could easily be provided throughout the country. For such setup, a huge amount of investment was required. First point, why the government kept such industries under their own control. Okay, public sector industries का control government ने अपने पास क्यों रखा, या कौन सी इंडस्ट्रीज या जिन इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंडर रखा गया, क्यों किया गया ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, पब्लिक सेक्टर की थी या पब्लिक सेक्टर के अंडर रखी गई, जिनकी रिक्वायरमेंट या जिनकी ज़रूरत थ्रू आउट द कंट्री थी, या ऐसी सर्विसेज या ऐसी गुड्स प्रोवाइड कर रही थी जो कि थ्रू आउट द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी एज एन बेसिक और नेसेसरी कॉमोडिटी और गुड्स, ओके. और सर्विसेज जो बेसिक या नेसेसरी गुड्स थी या सर्विसेज थी सभी के लिए. सो ऐसी गुड्स या इन तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ज़रूरी था. लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी. सो फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं था. सो गवर्नमेंट हैड टू इनिशिएट. सेकेंड वन, these were the industries which were providing the goods and services which were basically for upliftment of the quality of life of the people, or improvement of the quality of life of the people, or such services which were enhancing the capacity of production, for example power generation, okay. या तो ये वो goods and services थी जो quality of life को improve कर रही थी, okay. अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी कैन ऑब्जर्व, ओके. सो ये बहुत ज़रूरी थी डेवलपमेंट के लिए कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए या प्रोड्यूस किया जाए. दूसरी तरफ ये ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर रही थी या प्रोवाइड कर रही थी जो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, या प्रोडक्टिव कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी थी या नेसेसरी थी. दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैड टू टेक ओवर द कंट्रोल, ओके. सो सच इंडस्ट्रीज वर taken over by the government and these were known as public sector. इनके resources को government ने अपने control में रखा. Apart from such industries, some industries were also there which are not so much significant but are also contributing to the development or the process of growth and also assisting the industries which were reserved for public sector. जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने रिजर्व रख दी हैं, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को असिस्ट करेंगी, वो इंडस्ट्रीज़ हमने सेकेंड कैटेगरी में रखा. दूसरी तरफ ये पार्टनरशिप में चलाई गई. रीज़न बीइंग गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू ब्लॉक द फंड्स इन सच इंडस्ट्रीज बिकॉज दीज वर नॉट the foundation or the primary requirement for growth or development of the economy. So that government wanted that private sector should also come forward to invest in such industries so that we can make a partnership and run such industries for the development or growth of the economy. Okay, जो assisting थी, lead industries थी, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस या कमांडिंग हाइट्स की, ओके, उनको हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रखा. एंड रेस्ट अदर इंडस्ट्रीज और ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, और द इंडस्ट्रीज विच वर
mainly producing the household goods or the goods which are needed by the consumers, okay? Like textile industries. These industries were reserved for public sector or put in the third category, that is private sector, okay? The next one is industrial licensing. The government had adopted a policy of licensing for the private sector to put a control on them so that they can make regional equality in the economy. So basically, industrial licensing was the policy that the private sector enterprises had to take a license or the prior approval from the government either to commence their business or to expand. Okay, या तो अपना business start करने के लिए या फिर industries या enterprises set up करने के लिए, establish करने के लिए, या फिर अपने business को expand करने के लिए, production capacity expand करने के लिए भी they had to take the license. Okay, and government through this policy, the government took over the control of regional equality. That means government was easily or conveniently issuing or widely issuing the licensing or licenses to such industries which are establishing their units in rural or backward areas, okay, so that those areas can also be equally developed with the urban areas, okay. गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज को जो है प्रमोट करना शुरू किया है, उनको लाइसेंसेज इशू करना शुरू किया जो कि रूरल और बैकवर्ड एरियाज में अपनी यूनिट सेटअप कर रही थी, ठीक है. सो थ्रू लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ट्राइड टू एस्टैब्लिश रीजनल इक्वालिटी, ओके. वो इंडस्ट्रीज को इजीली लाइसेंस दे रही थी जो कि रूरल और बैकवर्ड एरियाज में अपनी यूनिट सेटअप कर रहे थे. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल शॉप्स और इंडस्ट्रियल कंसेशंस. इनको हम इंडस्ट्रियल शॉप्स भी पढ़ते हैं कई जगह पे और कई जगह पे इंडस्ट्रियल कंसेशंस के नाम पे भी आती हैं. दिस वाज अनदर एफर्ट टू मेक और टू सेट अप रीजनल इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल शॉप्स और कंसेशंस. Through this policy, the government offered some or launched some lucrative schemes or policy for the private sector enterprises or industries, in which they were provided the tax holiday. Tax holiday, that means they were exempted from paying the tax on their profits. उनको टैक्स पे छूट दी गई कि उनको अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं अप टू ए सर्टेन टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, यूनिट सेटअप होती हैं, दे आर ऑफर्ड द टैक्स हॉलीडे, complete tax holiday for the initial or first 5 years and 50% of the tax for the next 5 years. That means उनको 10 years का tax holiday provide किया जा रहा है, दिया जा रहा है. Okay, such provisions were also made in industrial policy resolution in 1956 by the government, so that more and more industries could come up with their plants or units. In this policy or this scheme was also focused on regional equality, so the government provided such facilities to those industries or those industrial units which are establishing their units in the backward areas or remote areas. Facilities क्या दी गई? टैक्स हॉलीडेज दिया गया, सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी. दैट मीन्स जो चार्जेस थे इलेक्ट्रिसिटी के या पावर सप्लाई के वो काफ़ी कम उनसे लिए जा रहे थे, उनके ऊपर इम्पोज किए गए. ओके, सो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर पावर सप्लाई एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करी थी, लाइक SEZs. ओके, सो दीज वर द एलिमेंट्स और द कॉम्पोनेंट्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर IPR 1956 to improve or to promote the industrial setup in the economy. The next one is small scale industries or SSIs that proved as a policy instrument to promote the industrial setup in the economy. बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज ही कंट्रोल कर रहे थे या मेंटेन कर रहे थे, या फिर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, बिकॉज दे नीडेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, सो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, दोज हु डू वांटेड टू इन्वेस्ट एंड टू सेट अप देयर बिजनेस और स्टार्ट देयर एंटरप्राइजेस, उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक जो पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया. ठीक है, नाउ व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? Basically, SSIs were labor intensive. The first characteristic says this:
SSIs are labor intensive. Okay, as these industries are labor intensive, more and more labor forces can be absorbed. Okay, workforce can be absorbed in such industries, and the problem of disguised and underemployment can be removed from the primary sector, which we were observing earlier. Okay, पिछले कुछ टाइम से जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को अपार्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट ये डिस्गाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी एक क्रूशियल प्रॉब्लम है जो डेवलपमेंट या ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है. ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को जो है एसएसआईज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इजीली रिमूव या ओवरकम एसएसआईज के थ्रू हम कर सकते हैं, बिकॉज एसएसआईज नीड मोर एंड मोर वर्क फोर्स. कम से कम जो है कैपिटल रिसोर्सेज या कैपिटल गुड्स ये यूज़ करती है, मशीनें कम यूज़ करती है, लेबर फोर्स ज़्यादा यूज़ करती है. ओके, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं. सो more workforce is required, more employment opportunities can be increased. As a result, poverty can be reduced, or this will help to overcome the poverty of the economy. The next one is locational flexibility. SSIs shows locational flexibility. The next point is locational flexibility. Basically, the heavy industries or large scale industries require huge amount of raw material or quantity of raw material. So these industries would set up their units in such areas where they could easily or conveniently get the raw material, so that their cost of transportation can be reduced. As a result, their cost of production or the prices of the products could also be lowered down. Okay, लार्ज इंडस्ट्रीज़ को या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, सो वो अपनी यूनिट्स वहाँ पे सेटअप करेंगे जहाँ पे उनको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए. ओके, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो जाए, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी कम रख सकते हैं या कम प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं मार्केट में. ओके, वेयरएज ऑन द अदर हैंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज need very less raw material or less quantity of raw material. So these industries or these units can be established in such areas where the large scale industries did not establish their units, or industrialization was not established or started yet. Okay, ऐसे एरियाज़ में, रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल बहुत कम चाहिए तो उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, the large scale industries, if we do want to relocate the large scale industries or to shift a unit of a large scale industry, it would be very cool or relocate that unit, because वहाँ पे बहुत सारी मशीन होगी, बहुत बड़ा प्लांट होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स हैं, उनके स्टॉक को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी. एंड इफ such problems arises, the small scale industries or units of small scale industries could easily be or can easily be transported or shifted to other locations at a very low cost. Okay, that's why small scale industries show the locational flexibility. ऐसे एरियाज में एस्टैब्लिश की जा सकती है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, तो उन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जा सकता है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है. Apart from that, if requirement is there, if units are to be shifted, okay, so they could easily be shifted as compared or in contrast to the large scale industries. The next one is low investment, or they are equity oriented. Okay, so small scale industries हैं, उनमें investment की requirement काफ़ी कम है, so that's why these are equity oriented too. Low investment, capital requirement काफ़ी कम है क्योंकि रिसोर्सेज कम चाहिए. ओके, बेसिकली द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज 5 करोड़ रुपीज. ओके, इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 5 करोड़ रुपीज है. इनिशियली इट वाज वेरी लो, फ्रॉम 5 लाख इट हैज बीन स्टार्टेड, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 5 करोड़ रुपीज. ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफ़ी कम है. ठीक है, जिस वजह से इक्विटी ओरिएंटेड मीन्स कि वो एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, वो भी अपनी यूनिट सब सेटअप कर सकते हैं. गवर्नमेंट हैड मेड द प्रोविजन टू सेटअप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इट इज इक्विटी ओरिएंटेड. दैट मीन्स
इंडस्ट्रियल एरियाज और इंडस्ट्रियल सेटअप्स के अलावा कुछ ऐसे एरियाज जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बेशक से स्मॉल स्केल पे लेकिन यूनिट सेटअप की जा सकती है एंड दे कुड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सच एरियाज और इन द एरियाज विच आर backward or remote areas. Okay, so these are basically known as equity-oriented industries. After that, we will discuss about the features of the small-scale industries and out of these features of the characteristics, we will draw out some positive and negative points. Okay. The features of the industrial growth or industrialization. The first feature says that the public sector, the government had played an important role. Okay, that means government controlled the process of industrialization earlier. Okay, the very first feature. Second one says that private sector had to play a secondary role because the private sector was of the opinion or the objective or the motive of the private sector was earning profit. So that the government was of the opinion that if private sector was given a primary role, they would exploit the resources for their own benefit or capitalism could be increased or promoted in the economy. And as a result, the gulf between poor and rich can be increased. That's why the private sector had to play a secondary role. The next one is in the process of industrialization, the focus of industries was on import substitution. That means the industry started producing such goods, or the focus of industries was on such goods which are being imported. Okay, the government was of the opinion that we have to create alternate, or we have to find out or discover the alternate resources or the alternate goods which are being imported, so that our dependence on imports can be reduced, and ultimately the foreign exchange reserves could be saved. Okay, जो हमारे foreign exchange reserves है या foreign currency reserves है उनको बचाया जा सके. Okay? The next one is the domestic industries were protected from the foreign trade by imposing the tariff and non-tariff barriers. Okay, जो domestic trade था उसको foreign trade से बचाया गया by imposing tariff and non-tariff barriers. Tariff barriers were the tax barriers, the import duties, and non-tariff barriers were the quantitative barriers, the import quotas, the limit of imports. Okay, the quantitative limit of imports were fixed. That means एक certain amount से ज़्यादा import नहीं किया जाए. Okay, तो domestic trade को foreign trade से protect किया गया, so that the foreign companies or MNCs or the foreign products could not exploit the domestic market. Okay, हालांकि इसके कुछ negative results हमें देखने को मिले later on. The next one is जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका जो फोकस था और टू एस्टैब्लिश लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द इकोनॉमी. मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली इसलिए डेवलप की ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस डेवलप किया जा सके. ऑन द अदर हैंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड विद द व्यू टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टू क्रिएट economic equality in the country. Okay, exercise the small scale industry इस पर्पज से इस ऑब्जेक्टिव से एस्टैब्लिश की गई. ओके, यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें देखी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स. कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस था वो भी एस्टैब्लिश तो प्रमोट किया गया क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट